Hello everyone, welcome to our YouTube channel Wisdom Tutorials. I hope you all are safe at your place. The previous video which was made on the same topic had some technical glitches. Hence, with all your requests, we have made another video on the same topic. So if you have already seen the previous video, you can skip the first 13 minutes, and if you are new to the channel, please like, share and subscribe. Let us start. Today we are going to understand a very beautiful topic. I want you all to take the guess of this topic. Now children, screen पे आप लोग देख रहे हैं, there are few articles. Can you please tell me what is common in all of them? Beautiful children, ये सारे के सारे article they are made up of aluminium. अच्छा क्वेश्चन ये है कि सर ये aluminium बनता कैसे? So it is extracted from dust particles. अच्छा ये डस्ट पार्टिकल्स कहां से मिलेंगे? These dust particles they are extracted from the mines, and from the mines the metal aluminium is extracted. So to extract aluminium, children, the mineral which is required, it is called as bauxite. The chemical formula for bauxite is Al2O3 dot NH2O. अब दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा. पहला, यहां पे डॉट क्यों है? दूसरा, व्हाट इज एन डूइंग ओवर हियर? So the answer to this question is, whenever you have a big formula inside which there are different small formulae, they are separated by using dot. Why there is n in between, children? Because the level of moisture keeps on changing. Hence we have used the variable n. Now this was the mineral bauxite that was extracted from the ground. Inside this mineral bauxite there are two different components, and those two components are the pure bauxite, which has a chemical formula Al2O3 dot 2H2O. Why? Because there the level of moisture is fixed. Since it is a pure bauxite, it has a fixed formula Al2O3 dot 2H2O. Now it is pure bauxite. What is going to be another component? Simple children, it is going to be the impurities. Now impurities in scientific term they are called as gangue. Now in this process there are three different types of gangue. The first important gangue is silica dioxide. Formula for silica dioxide is SiO2. The second important gangue is sand particles, whereas the third important gangue is ferric oxide. Why we are using ferric over here? Because formula को बनाने के लिए हम लोगों ने higher valency consider किया, and that was 3. So Fe2O3 is the formula for ferric oxide. अच्छा हमें क्या करना है? हमें एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है. कहां से? बॉक्साइट से. To extract aluminium from the mineral bauxite, there are two different steps. The first important step is concentration of bauxite, जिसमें हम लोग फोकस किस पे करेंगे? बॉक्साइट पे. मतलब किसको हटा देंगे? गैंज को. And the second important step is electrolytic reduction of alumina. Electrolytic, electro stands for electricity, lytic stands for splitting. मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को पास करके एल्यूमिना को स्प्लिट करेंगे, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे. Let us understand the beautiful journey, children. Let us focus on the first step, that is concentration of bauxite. अच्छा यहाँ पे फोकस किस पे करना है बच्चा लोग? बॉक्साइट पे. तो सबसे पहले क्या किया जाता है? जो हमारा मिनरल ओर था, what was our mineral ore? It was bauxite. So mineral ore को क्रश किया जाता है. क्रश करने के बाद it is added in a tank. The tank, children, it is called as digester. Once again, the mineral ore is crushed. It is added in a tank. The tank is called as digester, which is filled with hot concentrated caustic soda. Caustic soda is NaOH, we all know that. तो क्या किया हम लोगों ने? मिनरल ओर को क्रश किया, क्रश करके टैंक में डाल दिया. द टैंक वाज कॉल्ड एज डाइजेस्टर, एंड दैट वाज इंटरनली filled with hot concentrated caustic soda, that is NaOH.
and after adding NaOH, we are going to boil the mixture. Now children, boiling the mixture at what temperature? We are going to boil the mixture at 140 to 150 degrees Celsius temperature. This reaction has to be done for 2 to 8 hours, and this is done under very high pressure. वंस अगेन मिनरल ओर को क्रश करेंगे, टैंक में डाल देंगे. टैंक का नाम क्या है? डाइजेस्टर. अच्छा, डाइजेस्टर में और क्या ऐड करेंगे? NaOH, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा. और क्या ऐड करेंगे? अच्छा, हीट करेंगे. हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पे? 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस. टाइमिंग क्या होगा? फॉर 2 to 8 आवर्स एंड इट हैज टू बी अंडर वेरी हाई प्रेशर. अच्छा, अभी हम लोगों ने किसके साथ किया? मिनरल बॉक्साइट के साथ. इसका मतलब टैंक के अंदर दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. कौन से दो कंपोनेंट्स? प्योर बॉक्साइट भी है और इम्प्योरिटीज भी है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस विद द इम्प्योरिटीज फर्स्ट. सो लेट्स फोकस ऑन अ पार्ट कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ गैंज. गैंज को कैसे निकालेंगे? तो गैंज कौन से थे? द फर्स्ट गैंज वाज सिलिका डाइऑक्साइड, द सेकेंड गैंज वाज ferric oxide, and the third gangue was sand particles. Acha, they all will react with hot concentrated caustic soda. Let us understand what is going to be the product. So when silica dioxide reacts with NaOH, it makes water soluble sodium silicate. When I say water soluble, इसका मतलब इस गैंज को रिमूव करने की जरूरत नहीं है. तो क्या करेंगे? वी विल एड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, इट विल गेट डिसॉल्व कंप्लीटली. तो पहला गैंज पार्टिकल निकल गया, दैट वाज सोडियम सिलिकेट विद फॉर्मूला NaSiO2. What will happen with ferric oxide and sand? Children, ferric oxide and sand does not react with NaOH. तो क्या करेंगे? इट इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन. ओके, फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको निकाल दिया. माय क्वेश्चन इज व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट? कैन यू टेल मी द रीजन बिहाइंड दैट? ओके, टेल मी. फेरिक ऑक्साइड, फेरिक आयन इज अ मेटल. फेरिक ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड. चिल्ड्रन, metal oxides are basic in nature. NaOH itself is a base. So two bases cannot react. Hence ferric oxide and sand are removed by filtration. तो हमने क्या किया? फिल्टर करके ferric oxide and sand को निकाल दिया. अच्छा, सिलिका डाइऑक्साइड का बना सोडियम सिलिकेट, जिसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको भी डिसॉल्व कर दिया. Can I say my all the gangue particles are removed? Let us understand what happens with the pure bauxite. Children, recall the formula for pure bauxite. It was Al2O3 dot 2H2O. So when this pure bauxite is reacted with caustic soda, which had a formula NaOH, what happens? It forms sodium aluminate. Now children, sodium is Na with valency 1. Aluminate is AlO2, also has valency 1. So when they are crisscrossed, you get a formula NaAlO2. So this is our sodium aluminate, and we get some water molecules, that is H2O. Now children, if you observe this equation, this is not a balanced equation. So let us go for balancing them. Now on the left hand side, if you observe, there are 2 atoms of aluminium. But on the right hand side there's only 1 atom of aluminium. तो क्या करेंगे? aluminium को बैलेंस करने के लिए we will be multiplying the right hand side by 2. चलो, ये तो हमने बैलेंस कर दिया. अच्छा, जब राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया, there was sodium also, right? So automatically the बाजू वाला got affected. बाजू वाला सोडियम कितना हुआ? Now it is 2 on the right hand side, but it is still 1 on the left hand side. तो क्या करेंगे? लेफ्ट साइड को we will multiply it by 2. तो चलो, सोडियम भी बैलेंस हो गया. What about hydrogen, children? हाइड्रोजन लेफ्ट में
बॉक्साइट के फॉर्मूला में देयर वर 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस NaOH के साथ देयर वर 2 more atoms of hydrogen. So 4 and 2 is total 6 atoms of hydrogen. What about children right hand side? Right hand side में तो सिर्फ 2 ही atoms है. अच्छा मुझे 2 को 6 बनाना है, क्या करेंगे हम लोग? We will multiply the right hand side by 3. Now can you see the equation is a balanced equation? It is very important to write a balanced chemical equation. अच्छा इन सब चीजों में तो हम लोग भूल ही गए, हमारा एक्चुअल टास्क क्या था? The actual task was to extract aluminium. Aluminium कहाँ पे चिल्ड्रन? It is present in sodium aluminate. तो अगला प्रोसेस किसके साथ होगा? अगला प्रोसेस होगा सोडियम एल्यूमिनेट के साथ. तो सोडियम एल्यूमिनेट को क्या करेंगे? दिस सोडियम एल्यूमिनेट इज हाइड्रोलाइज्ड, नहलाया जाता है किससे? पानी से. दैट मींस इट इज रिएक्टेड विद वाटर. So when sodium aluminate is reacted with water, sodium combines with water to make sodium hydroxide, and aluminate ion combines with water to make aluminium hydroxide. But children, this aluminium hydroxide is obtained as a precipitate. We don't want precipitate over here. तो हम लोग क्या करेंगे? We will filter this precipitate. अच्छा फिल्टर करने के बाद काम हो जाएगा? नो, इट हैज टू बी वॉश्ड अगेन. वॉश करने के बाद काम होगा? नो, इट हैज टू बी ड्राइड. अच्छा ड्राई करने से ऊपर का मॉलिक्यूल्स तो निकल जाएगा. व्हाट अबाउट द इंटरनल वाटर पार्टिकल्स? दैट हैज टू बी इग्नाइटेड. इग्नाइट करेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस. So this aluminium hydroxide is ignited, it is heated at a tremendous high temperature of 1000 degrees Celsius. अब जब आप इसको हीट करोगे, इग्नाइट करोगे, so what will happen? हाइड्रोक्साइड का हाइड्रो निकल जाएगा. क्या बचेगा? ऑक्साइड बचेगा. So after igniting aluminium hydroxide, you get aluminium oxide. And along with aluminium oxide, the water molecules are released completely. Children, this aluminium oxide is our final product in concentration of bauxite. But the equation is not yet balanced. Let us balance the equation, children. Left में aluminium 1, right में aluminium 2. क्या करेंगे? लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. अच्छा लेफ्ट में हाइड्रोजन अर्लियर वाज 3, हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, मतलब टोटल कितना हो गया? 6. राइट में हाइड्रोजन कितना है? 2, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से. द बैलेंस्ड इक्वेशन इज 2AlOH thrice on igniting forms Al2O3 plus 3 water molecules. So that was our concentration of bauxite. अब हमें क्या मिला? We got aluminium oxide. Children, this aluminium oxide is also called as alumina. अच्छा, alumina का melting point is very high because now we need to go for electrolytic reduction. We need to pass on electricity. Electricity को पास करने के लिए alumina को melt करना पड़ेगा. So to melt alumina, the melting point is very high. First of all, it is a bad conductor of electricity. Secondly, it has its melting point more than 2000 degrees Celsius. अब इतना बड़ा टेम्परेचर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट को कम करना पड़ेगा. अच्छा मेल्टिंग पॉइंट कम कैसे करेंगे? We will reduce the melting point to 1000 degrees Celsius by adding 2 catalysts. The first catalyst is cryolite. Children, cryolite has a formula AlF3 again dot 3NAF. वापस से दो फॉर्मूला. Aluminium fluoride, sodium fluoride. AlF3, aluminium का वैलेंसी 3, फ्लोराइड वैलेंसी 1, क्रॉस करेंगे AlF3. सोडियम फ्लोराइड, सोडियम वैलेंसी 1, फ्लोरीन वैलेंसी 1, क्रॉस करेंगे क्या मिलेगा? NAF. So formula for cryolite is AlF3 dot 3NAF, and the formula for fluorspar is CaF2, which is calcium fluoride.
Calcium का valency 2, fluoride has valency 1. When you cross them, you get CAF2. That is CaF2. Now, children, after melting alumina, the next process starts. Name of the process is electrolytic reduction of alumina. यहां पे क्या करेंगे? We will reduce alumina by passing electricity. So to perform this process, we require a very big setup. The setup will have a steel tank. Now this steel tank is internally lined by graphite, and that graphite is connected towards the negative terminal, which is called as cathode. Externally, you can observe few sets of carbon rods. These carbon rods are connected towards the positive terminal called as anode. So anode पे there are carbon rods, cathode पे there is graphite lining. You can observe outlet for the aluminium to be extracted. अब क्या करेंगे? स्टील टैंक के अंदर we will add the mixture of cryolite and fluorspar along with alumina. तो चलो मिक्सचर भी ऐड कर दिया. अब क्या करेंगे? करंट का फ्लो स्टार्ट कर देंगे. आफ्टर पासिंग करंट व्हाट विल हैपन? एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या था बच्चा लोग? Al2O3. क्या होगा? इट विल स्प्लिट किस में होगा? दो आयोन्स में. एक तो मिलेगा एल्यूमिनियम आयन विच इज Al3 प्लस. अच्छा प्लस है तो इट इज कॉल्ड एज केटायन. एंड द नेक्स्ट इज ऑक्साइड आयन. माइनस है, ऑक्साइड आयन इज called as anion. So cation is aluminium ion, anion is oxide ion. Now look at the terminal. We have anode which is connected to carbon, we have cathode which is connected to graphite. जैसे ही करंट पास करेंगे, these ions will migrate towards their opposite rod. For example, aluminium ion पॉजिटिव है, कहां पे अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव. नेगेटिव कहां पे बच्चा लोग? इट इज कैथोड. ओके, ऑक्साइड आयन नेगेटिव है, कहां पे अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव कहां पे बच्चा लोग? एनोड. अब अट्रैक्शन हुआ, अब इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे एंड दे विल बिकम न्यूट्रल. सो लेट अस अंडरस्टैंड द आयोनिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस ओवर हियर. व्हाट हैपेंस एट एनोड? अच्छा, एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव वाला आयन आएगा विच इज O2 माइनस, ऑक्साइड आयन. ऑक्साइड आयन का न्यूट्रल स्टेट इज ऑक्सीजन गैस विच इज O2. अब लेफ्ट में अगर आप देखोगे देयर इज ओनली वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. राइट में आप देखोगे देयर आर टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनको बैलेंस कर देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2. अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद if you observe there are 4 negative charge in excess. अब अगर 4 नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग? 4 नेगेटिव चार्जेस को लूज करना पड़ेगा. क्यों लूज कर रहे हैं हम लोग पता है आपको? वेरी सिंपल फंडा. सी, सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा न्यूट्रल बनने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा न्यूट्रल बनने के लिए. प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है. तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वो क्या करेगा? नेगेटिव डोनेट कर देगा. और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो क्या करेगा? नेगेटिव गेन करके न्यूट्रल बन जाएगा. ऑक्साइड के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है. कितना नेगेटिव ज्यादा है? 4. इट विल लूज इट्स 4 इलेक्ट्रॉन टू बिकम ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. आपने आज तक इतने सारे रिएक्शंस लिखे, इतने सारे रिएक्शंस पढ़े, कभी दो रिएक्टेंट को माइनस होते हुए देखा? कभी भी दो रिएक्टेंट के बीच में माइनस का साइन देखा? नहीं. बट हियर यू कैन ऑब्जर्व देयर इज अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन, दैट इज 2O2 माइनस -4 इलेक्ट्रॉन. तो -4 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एरो के राइट साइड में पुश करूं, दैट विल टर्न इनटू +4 इलेक्ट्रॉन. नाउ द इक्वेशन इज लुकिंग परफेक्ट. So this is the ionic reaction taking place at anode and we got oxygen gas which is getting liberated at anode. अब point क्या है? The next rod which was cathode. Cathode is the negative terminal. अच्छा, negative terminal है तो उस पे positive ion attract होगा.
पॉजिटिव आयन कौन है? इट इज Al3 प्लस. इट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज इन एक्सिस. Al3 plus मतलब aluminium ion which is a metal. Children, metals are monoatomic. ऊपर वाला ऑक्सीजन गैस था, गैसेस आर डाइएटॉमिक, इसलिए O2 लिखा. नीचे मेटल है, मेटल्स आर मोनोएटॉमिक, इट इज गोइंग टू बी Al. लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ एटम्स में डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस कहां पर है? चार्जेस में. लेफ्ट साइड में देयर आर 3 पॉजिटिव चार्ज इन एक्सिस. क्या करेगा? इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम न्यूट्रल. So we got aluminium atoms in its molten state, and these aluminium atoms which are in molten state, they are collected from the outlet, and hence we received the metal aluminium in its molten state. अब ये molten state of aluminium is further carried to the respective factories where the metal is extracted in the form of different articles, and we use that metal in our day-to-day life. Thank you so much, children. Thank you so much for your time. God bless you all.